Good morning, Sravani, Nabin, then Ansu and Nikki. Very good. Good morning to all of you. आज बहुत खुशी लगुच आज क्लास पूर्व बहुत जन अच्छा एक्चुअली मो क्लास आज लेट होगला ड्यू टू सम इश्यू मु उठे सारे क्लास रे। हाँ गुड मॉर्निंग हीराधर तुम्हें जमा क्लास तो केबे मु करिवार देखिनी किंतु प्रथम थर पे तुम्हें क्लास करछ। ओके समस्त को गुड मॉर्निंग एवं जय जगन्नाथ। आरंभ करवा आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा आल्डिहाइड कीटोन रो एरोमेटिक रिएक्शन गुडाक माने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दैट इज नाइट्रेशन सेक्शन टा ठीक अछि। सो वी विल डिस्कस लेट्स हैव ए रिवीजन. So the organic compounds that is containing CO is carbonyl, RCHO aldehyde, RCO addes ketone, RCHO prefix होची formyl, suffix होची al aldehyde. एगुड़ा को डिटेल्स तुम्हें प्रीवियस वीडियो को गोटे गोटे जाकि देखिले सब गुड़ा को जान परिबो. कीटोन रो सफिक्स ओएनी प्रीफिक्स ऑक्सो. फर्दर अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले आमे प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले aldehyde, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले कीटोन पाइबा. फर्दर catalytic dehydrogenation in presence of copper catalyst also give rise to aldehyde and ketone, but dry distillation of calcium salt also give rise to aldehyde and ketone. By means of Rosen-Mond reduction reaction we can get aldehyde only, but the ketone can be prepared from acid chloride by reacting with dialkyl cadmium. Then alkyne undergoes hydrolysis and oxidation as well as in presence of HgSO4 and H2SO4 to produce aldehyde and ketone accordingly. Then alkene undergo ozonolysis to produce aldehyde and ketone accordingly. Further Grignard reagent react with hydrogen cyanide to produce aldehyde. Then Grignard reagent react with alkyl nitrile to produce ketone. Further by means of Hetad reaction we can prepare benzaldehyde from toluene by using CrO2 chromyl chloride and CCl4. By means of Getterman-Koch reaction benzene plus CO plus HCl in presence of AlCl3 and CuCl will produce benzaldehyde, and benzene plus aliphatic acid chloride will produce aromatic ketone. If we go for physical state, formaldehyde is a gas whereas others are liquids up to carbon 11, and after carbon 11 onwards all are solid. Lower aldehydes are more soluble in water whereas higher aldehydes or ketone are less soluble in water. अच्छा ठीक अछि श्रावणी. I was searching where is Shravani, why didn't he attend the class. Boiling point of alcohol is greater than boiling point of ketone is greater than boiling point aldehyde is greater than boiling point of alkene. It is due to the dipole interaction and dipole moment. Then aldehyde and ketone react with HCN to produce corresponding cyanohydrin. Further it react with NHSO3 to produce SO3NH, sodium bisulfite. Then upon further Grignard reagent on reacting with Grignard reagent it will produce alcohol. Upon reacting with hydroxylamine it will produce oxime. Upon reacting with hydrogen it will produce hydrogen, phenyl hydrogen, semicarbazone will be produced. Then 2,4-DNPH dinitrophenyl hydrogen it will produce 2,4-dinitrophenyl hydrogen. And then for aldol condensation the aldehyde must contain an alpha hydrogen. Then under aldol condensation the product is beta hydroxyaldehyde. These are the mechanisms of aldol condensation. Canninger reaction, the aldehyde which do not have any alpha hydrogen undergo Canninger reaction in presence of concentrated base to produce alcohol and corresponding sodium salt of carboxylic acid. It react with PCl5 to produce dichloroalkane and POCl3. Further react with formaldehyde react with
Formaldehyde react with ammonia to produce urotropin. Then it also react with aldehyde to produce aldimine. It also react with ketone to produce ketone amine. Catalytic, by means of catalytic reduction or by means of using LiLS4 as a reducing agent, we can get alcohol from aldehyde and ketone. By means of Clemmensen reduction, that is zinc, mercury amalgam and concentrated HCl, or by treating with hydrogen and KOH and glycol, we will get the alkane from the aldehyde and ketone accordingly. Iodoform reaction, the compound having CH3CO group undergo iodoform reaction, and whenever it react with iodine, it forms the yellow precipitate iodoform with releasing of sodium compound, sodium carboxylic acid accordingly. And then oxidation of aldehyde and ketone, oxidation of aldehyde ketone will produce carboxylic acid in presence of any oxidizing agent, that may be chromyl chloride or chromic acid or KMNO4 or acetic hydride K2Cr2O7, etc. It get oxidized in presence of Tollens reagent to give the silver mirror. What is Tollens reagent? It is the ammonical solution of silver nitrate. It is prepared by reacting AgNO3 plus NH4OH, which will cause the precipitation of silver hydroxide and formation of ammonium nitrate. The precipitate formed silver hydroxide again react with ammonia or ammonium hydroxide to form the diamine silver 1 hydroxide, which is the Tollens 1 reagent. This Tollens reagent, when react with aldehyde, it produces the corresponding ammonium salt of carboxylic acid as well as a silver mirror and ammonia plus water. Fehling solution is a two parts. It contains Fehling's A and Fehling's B. Fehling's A is the copper sulfate, so Fehling's A is the copper sulfate. Good morning, Lobocus. Fehling's A is the copper sulfate, whereas Fehling's B is the mixture of NaOH and Rochelle salt, that is sodium potassium tartarate. I have done the formula of tartaric acid. You can see this is the tartaric acid and this is the sodium potassium tartarate or Rochelle salt. Further, copper sulfate plus NaOH in presence of Rochelle salt will produce copper hydroxide and Na2 and sodium bisulfite. This copper hydroxide will produce copper oxide, cuprous oxide. Remember, this is cuprous oxide, and this cuprous oxide, when react with aldehyde, it produces the carboxylic acid as well as a red precipitate of Cu2, that is cupric oxide. So last class रा हमें देखी नबा homework गुड़ाक. ठीक है, what is the homework given or assigned in the last class? Let's have a look. तो ये रही इथानल को ऑक्सीडाइज कले आम कौन पाइबा, जोटा फर्दर टॉलेंस रिएजेंट सहित ट्रीटमेंट कले सिल्वर मिरर दब. व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ वी ट्रीट विथ इथानल? फर्स्ट प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड, सेकंड प्रोडक्ट अमोनियम एसीटेट. बहुत सुंदर आंसर नवीन. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज एसिटाल्डिहाइड. पिला माने एटा अल्कोहल अछि, अल्कोहल गिव राइज टू एसिटाल्डिहाइड. ओके, and whenever it get oxidized in presence of Tollens reagent, it will produce Tollens reagent. This is the ammonical solution of silver nitrate. So ammonical solution of silver nitrate मैंने हम already देखचे, that is your AgNH3 whole twice OH, AgNH3 whole twice OH. So we can put here AgNH3 whole twice OH. Very good, Lapocus. It will produce CH3CONS4, CH3COONS4, ammonium acetate. The ammonium acetate plus 2Ag plus NH3 plus 3NH3 plus water. पिला माने आम समस्त रिएक्शन मन रही कौन सी माने ना, किंतु रिएक्शन से मन रही अधारू अधिक थर प्रैक्टिस करवा. तुम्हें पढ़ा को बसला बेले स्टार्टिंग रू ही पढ़ो, जमी मुझे रिविजन कली गोटे चैप्टर जेको सेक्शन रू जब आरंभ कर ऑर्गेनिक जब आरंभ कर, मोर रिक्वेस्ट तुम्हें स्टार्टिंग रू पढ़. देख मात्र 5 मिनिट लगे रिविजन होइजिबा, किंतु देखिबो तुमरो सब गुडाक मन रही. जस्ट उल्टे उल्टे देखी देखी ए भलिया पळेबो.
आउ एठी ऑलरेडी सेकेंड रो प्रोडक्ट कहि सालेनी एसिटिक एसिड कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिटेट माने CH3COO CH3COO this is Ca calcium acetate plus calcium formate CaO COH COH, so this is calcium formate and calcium acetate, so this will produce the compound that is calcium acetate. जो मैंने भी लास्ट क्लास वीडियो देखी ना क्लास करी ना से मानको रिक्वेस्ट ए क्लासटा सरले से माने से वीडियो गुडा को कवर करनी कवर करदेले बहुत बेनिफिट हम कौन ना पूरा गोटे कनसेप्ट बिल्ड अप हो डेफिनेटली ग्यारंटी देकी कहबी तुम जदि ये डेली डेली टिके 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 ऑर्गेनिक देखीदव ऑर्गेनिक तुमर कंप्लीट हो ऑर्गेनिक तुमर आ मन रखा को असुविधा हेनी. सो दिस इज एसिटाल्डिहाइड. ओके, दिस इज एसिटाल्डिहाइड which upon treatment with failing solution रा presence रे तोला में treatment करबा what will be the product for the ADS failing solution means copper oxide use होबो. Okay, so it will react with copper oxide. failing solution रा copper oxide, failing solution माने copper sulfate and rochelle salt रा mixture, it will produce second the product कोन आसीबो तापरे further. What is the product further? Acetic acid. Very good. Acetaldehyde, so it will produce acetic acid plus further it will be your Cu2O, then acetic acid. हाँ, तीन नंबर आंसर एबे जाए कि कही ना 3 नंबर प्रोपेन 2O फास्ट प्रोडक्ट. अच्छा, प्रोपेन 2O फास्ट प्रोडक्ट हम 3 नंबर. नवीन भी कहले एसीटोन बहुत बढ़िया. नवीन लवकुश और श्रावणी हैज टोल्ड द राइट आंसर दैट इट इज फर्स्ट प्रोडक्ट इज एसीटोन एंड सेकंड प्रोडक्ट इज नो प्रोडक्ट. वेरी गुड नवीन, केते सुंदर लिखिछंती. थैंक यू नवीन. सो ये प्रोडक्ट जदि हम देखिबा CH3 CO CH3 एंड एज इट इज ए कीटोन देयर विल बी नो प्रोडक्ट फर्दर. एटी जेहेतु यहाँ गोटे कीटोन से ये कौन से प्रोडक्ट दबनी कारण आम ऑलरेडी देखीचे जे ओनली आल्डिहाइड एंड कीटोन गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट. ओके, बहुत सुंदर आंसर. नेक्स्ट जीवा 4 नंबर रो गोटे कंपाउंड को आम ऑक्सीडाइज कले बेंजोइक एसिड पाइबा. सी किंतु टॉलरेंस रिएजेंट सहित रिएक्ट कले कौन कौन प्रोडक्ट दबो. टॉलरेंस रिएजेंट माने AgNH3 होल ट्वाइस OH. फैलिंग सॉल्यूशन माने CO. कौन आसीबो 4 नंबर रो आंसर. एवळा पिला माने 5 नंबर भली क्वेश्चन आसे मु करेबी. आज क्लास सरले आसंता काली करेबी, बट आसंता काली क्लास अटेंड करिया गले तुमको बेसिकली आल्डिहाइड कीटोन रो पूरा कांसेप्ट क्लियर हो आसिया पड़ो. कारण आल्डिहाइड कीटोन रो जेकोनोसी सेक्शन रो जेकोनोसी क्वेश्चन भी आसी पारे. आ मन रख आल्डिहाइड कीटोन ही गोटे जियांट चैप्टर जो थिरु बोर्ड रे अधिका क्वेश्चन आसे. फर्स्ट प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड, सेकंड प्रोडक्ट एमोनियम बेंजोएट. वेरी गुड नवीन. एडी नवीन कहले जे बेंजोइक एसिड जेहेतु बेंजोइक एसिड माने बेंजाल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कले वी विल गेट बेंजोइक एसिड. फर्दर टॉलरेंस रिएजेंट सहित ट्रीटमेंट कले व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. टॉलरेंस रिएजेंट माने एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, it will produce ammonium salt of benzoic acid, that is ammonium benzoate. Both Lavakush and Navin have given the right answer. So this will be benzene. It will be COONS4, COONS4, O minus NS4 plus. Okay, plus ammonia 2Ag silver mirror will be formed. प्लस गोटे मिनिट पिला माने गोटे मिनिट रही जाओ.
Yes, 2 Ag plus mm, plus NH3 plus 3NH3 plus water, right? हाँ ठीक ଅଛି। ओके नेक्स्ट प्रॉडक्ट कौन हम 5 नंबर 5 नंबर रिएक्टेंट कौन हम कह एमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के भी प्रोडक्ट देना आंसर कौन हम नवीन व्हाट विल बी द आंसर कहा को रिएक्ट कले आमे कहा को NH2 आउ आक्वास KOH आउ ग्लाइकल सहित रिएक्ट करिया द्वारा आमे प्रोपेन पाइबा प्लस N2 नाइट्रोजन पाइबा कहा को रिएक्ट करिया द्वारा प्रोपेन प्लस नाइट्रोजन पाइबा कहा को रिएक्ट करिया द्वारा व्हाट इज द रिएक्टेंट which upon reacting with NH2 and aqueous KOH will produce as well as glycol will produce the propane कहा को पुणी ताको आयोडीन सहित रिएक्ट कले किंतु आयोडो फॉर्म दबो किंतु फेलिंग सॉल्यूशन रे नो प्रेसिपिटेट तार अर्थ एटा हम जानि दले जे एटा गोटे कीटोन ग्रुप कारण फेलिंग सॉल्यूशन सहित प्रोडक्ट दोन माने एटा गोटे कीटोन ग्रुप ताहले कोन अब आंसर को एबे पर्यंत केही भी आंसर कहि पार नांती व्हाट इज द आंसर कौन हम एटलिस्ट ट्राई कर नवीन आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कौन हम नवीन एटलिस्ट ट्राई करिके किए कह व्हाट विल बी द आंसर
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ नो वन ଇଜ୍ ଆନ୍ସରିଂ? ଭଲ ଲାଗୁନି? ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସରି ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଦେଖିଲାନି। एसीटोन एंड सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट सार आंसर कहूँ आप कमेंट्स चेक करंतु। ओके, रिएक्टेंट इज एसीटोन एंड प्रोडक्ट इज सोडियम एसीटेट प्लस CH3, वेरी गुड नवीन। यस, थैंक यू, सॉरी सॉरी, कहीं कि समय जाए आंसर शो कलानी तो मुझे अपेक्षा कली कौन आंसर शो करूनी। ओके, बहुत बढ़िया आंसर ऑलरेडी दे सारी, श्रावणी भी देती, ता सहित लवकुश भी देती, ता सहित नवीन पूरा सब गुड़ाक आंसर देती। रिएक्टेंट हूँ गोटे एसीटोन, कारण यहाँ जेहेतु फेलिंग सॉल्यूशन सहित ट्रीटमेंट कले कौन सी प्रोडक्ट दौनी ताल यहाँ गोटे एसीटोन। एसीटोन जो आयोडोफॉर्म सहित रिएक्ट कर, आयोडीन सहित NaO सहित रिएक्ट कर, इट विल प्रोड्यूस आयोडोफॉर्म प्लस एज वेल एज आउ कौन प्रोडक्ट आसो, एज वेल एज द प्रोडक्ट विल बी सोडियम एसीटेट दैट इज CH3CONA, राइट, CH3CONA। आ गोटे साइड कहीं मुझे कही तुम्हें जब मन रख यहाँ CH3, यहाँ ए साइडटा आयोडोफॉर्म, ए साइडटा सोडियम सॉल्ट देदेव, राइट। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत सुंदर, सोडियम एसीटेट प्लस आयोडोफॉर्म इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर पार्ट। आमे बर्तमान आउ गोटे जिनस देखा, व्हाट हैपेंस व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड को जितेबाला आमे ट्रीटमेंट करवा, बेंजाल्डिहाइड को जितेबाला आमे ट्रीटमेंट करवा फेलिंग सॉल्यूशन सहित, व्हेन एवर वी ट्रीट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, कौन हम रिएक्शन, व्हाट विल बी द रिएक्शन इफ वी ट्रीट विथ बेंजाल्डिहाइड विथ CuO? बेंजोइक एसिड हवा कथा बेंजोइक एसिड, राइट, but the product is not benzoic acid. But if we look towards the product is not benzoic acid, it will not react at all, so no reaction will be occurred in case of CuO, that is your failing solution. So इठी हमें गोटे नोट बा पॉइंट लिखी दबा, काहे की जीवनी I will explain you why it will happen. So नोट बा पॉइंट लिखी दबा, बेंजाल्डिहाइड does not corresponds to failing solution, failings test. तो ये गोटे फेलिंग्स टेस्ट, एटा कहीं, इट इज बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस, मुझे एक्सप्लेन करुच्ची, आगे लिखी दूची, ड्यू टू रेजोनेंस the carbonyl carbon acquires double bond with benzene carbon
CuO due to less oxidizing power agent, less oxidizing agent cannot break the bond, cannot break the bond, C double bond C bond, and make the formation of carboxylic acid. ओके सो ए जिनसटा कौन है मु बुझे दिए देख ये बेंजोइक एसिड रही ठीक अच्छे दिस इज योर बेंजोइक एसिड बेंजाल्डिहाइड दिस इज बेंजाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH ओके सो बेंजाल्डिहाइड रे पर्टिकुलरली जो रेजोनेंस हुए ये ए बॉन्ड एपट को शिफ्ट है ए बॉन्ड एपट को शिफ्ट हुए सो फर्दर व्हाट इज हैपनिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लुक लाइक दिस the double bond CO minus H and there will be a positive charge double bond and in the next step again it is resonating एटा पुणी आउथरे मूव करूची आउथरे हमर रेजोनेंस स्टार्ट होची again we are getting a resonating structure ठीक अछि so double bond CO minus H then here it will be a double bond एटी गोटी डबल बॉन्ड जमती रहा कथा रहिबो किंतु एटी गोटी पॉजिटिव चार्ज रहिबो ध्यान देकी देखो बिकॉज रेजोनेंस गोटे इंडिया जिनस बहुत पिला मु देखिछि ग्रेजुएशन रे जो पढ़ौछि पिला ग्रेजुएट पिला माने मध्य जी जनरल रिलेटिव जो माने आस्तंती इवन ऑनर्स भी जो माने आसंती सहज रे करि पारंती नाही रेजोनेंस सो काइंडली रेजोनेंस को भलो भाबरे ध्यान देकी देखो केमती रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए डबल बॉन्ड CO minus then H further there will be a double bond and this double bond will shift like this a double bond ta etiki shift hobo so there will be a double bond there will be a positive charge and in the next step again this double bond will shift towards the benzene ring and there is a minus charge which will shift towards the carbonyl carbon and further you will get a compound that is benzene it has your double bond it has your double bond C double bond OH तो देखो हमें स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर 5 एवढा पांचटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आम पाइले स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 भितर एति डिफरेंस जे एठी कार्बन गुडाक एपट साइड रहला बेले एठी कार्बन गुडा एपट साइड रहउछि ठीक अछि सो दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एवढा रेजोनेंस रे आमे जदि लक्ष्य करिवा पर्टिकुलरली इन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर इज ए डबल बॉन्ड एठी गोटे डबल बॉन्ड रही C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C माने 2 3 4 रे C डबल बॉन्ड C कैरेक्टर रहउछि 1 5 रे जदि चर न रहउछि किंतु 2 3 4 रे रहउछि तो CO पाखरे CO गोटे लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेतिबारु ये एतटा रेडियो ऑक्सीडाइज करि पारु नाही ताले तुमे प्रश्न करियो सर कैन इट बी पॉसिबल फॉर टॉलरेंस रिएजेंट टू गेट टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस करि परिबो कि टॉलरेंस रिएजेंट सॉरी ऑक्सीडाइज करि परिबो कि इज इट पॉसिबल फॉर टॉलरेंस रिएजेंट आई थिंक यस बट आई एम नॉट श्योर कारण बुक रे तो से बळे मु केबे देखिनी किंतु टॉलरेंस रिएजेंट मे बी aromatic aldehyde करि परिबो because tolerance reagent is a good oxidizing agent which get reduced itself so हमर एठी मन रख this will not react at all for this aromatic aldehyde so बर्तन हमें ठीक अछि हमें नेक्स्ट हमें पढ़िबा लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेस टॉपिक बा आजिर क्लास कह गले ए चैप्टर माने एठिरो लास्ट टॉपिक या पर हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा किंतु एठिरो लास्ट टॉपिक तो फर्स्ट वन इज
द लास्ट रिएक्शन एठी हमर केते नंबर रिएक्शन जाइतिला देखिनिए ऑक्सीडेशन जाइतिला आई नंबर आई थिंक आई नंबर जाइतिला ना यस आई नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जाइतिला तो आमे तापर आमे देखथिले ऑक्सीडेशन माने आमे नेक्स्ट आमे देखिबा जे नंबर रिएक्शन जे नंबर रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in aromatic aldehyde and ketone. In aromatic aldehyde and ketone, both aldehyde and ketone undergo this type of reaction. Aromatic aldehyde and ketone. तो आम देखा सब्स्टिट्यूशन कौन इलेक्ट्रोफिलिक एटा पिला माने फास्ट ईयर सहित टिके लिंक रही किंतु मो फास्ट ईयर लिंक सहित टॉपिक गुडा को भी एलाबोरेट कर दूची फास्ट ईयर जदि जड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नथिबा बुझी परिबो तो सब्स्टिट्यूशन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन अच्छा सब्स्टिट्यूशन माने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहले कौन बुझे आमे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहले कौन बुझा जाए इनऑर्गेनिक सिलेक्शन क्वेश्चन दोन सर मो हीरा आज क्वेश्चन दे देवी ठीक अच्छे तुमको पीडीएफ पठे देवी आज चिंता ना हीरा क्वेश्चन पठे देवी इनऑर्गेनिक इंपोर्टेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इवेन मु क्वेश्चन गुडा को लेके आसुची किसी दिन भीतर क्वेश्चन गुडा सॉल्व करके आसबी कह सब्स्टिट्यूशन माने कौन व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन यस कंपाउंड ऐड करवा माने एडिशन हम तो देख गोटे ग्रुप थी लाइक आर CH2X सब्स्टिट्यूट कर सर सब्स्टिट्यूट कर हाँ ताको टिके खोली कह सब्स्टिट्यूट करवा प्रेमोस कहले RCH2X रही ठीक अच्छे तो ये पर्टिकुलाली मु OH माइनस को आनिकी लगेली ए OH माइनस आसिकी या जगह सब्स्टिट्यूट है का जगार CH2 जगार यहाँ कह RCH2OH विल बी प्रोडक्ट एज वेल एज X माइनस बाहर की पड़ेगा तो कौन है इधर जड़े बाहर की पड़ेगा सपोज तुम कोचिंग सेंटर रे गोटे केमिस्ट्री सार बोलिकी पूर्ण सार बोलिकी तुम कोचिंग सेंटर रे बा कॉलेज रे सपोज आई एम टीचिंग एज ए फैकल्टी एट योर कॉलेज सपोज भाव केमिस्ट्री मु पढ़ाऊली ठीक अच्छे हठात कौन है आई गॉट ए जॉब और आई हैव टू मु कौन कली जॉब पाई आउ कौटी स्थानांतरित हो गली माने से कॉलेज छाड़देली सो व्हेन एवर आई माने मु जो ट्रांसफर हो गला मु जो कॉलेज रे थिली सपोज मु मनकर थिली तुमर लेट इट बी कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज रे सपोज मु थिली ठीक अच्छे कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज रे आई वाज लेट इट बी ठीक अच्छे आई एम नॉट एट कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज मु थिली किंतु परवर्ती मुहूर्त आई गॉट टू खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज व्हिच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू खलिकोट यूनिटरी यूनिवर्सिटी तो कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज रु खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज को आसीगली ताले कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज रे गोटे केमिस्ट्री फैकल्टी कमी गले सेही केमिस्ट्री फैकल्टी पोजीशन इज अगेन ऑक्युपाइड बाय सपोज अनदर टीचर दैट इज योर लेट इट बी संतोष साहू ठीक अच्छे लेट इट बी संतोष साहू सर ठीक अच्छे संतोष साहू बोलिकी जड़े सार अच्छा सी कौन कले कलाहांडी रहिले राइट एंड आई कम टू खलिकोट ऑटोनोमस कॉलेज सो ये कलाहांडी तुम कलाहांडी ऑटोनोमस कॉलेज बा तुम कॉलेज रे मु चली जावा बदल रे आउ जने आसिकी सब्स्टिट्यूट हो गले यस यस श्रावणी यू आर राइट मु चली जावा बदल रे आउ जने आसिकी सेठी सब्स्टिट्यूट हो गले ठीक अच्छे तो से भली आमे कहि परिवा जे गोटिए ग्रुप
जड़े सब्स्टिट्यूट गोटे ग्रुप पलैला आउ जड़े सब्स्टिट्यूट हो गले माने तुम्हें केमती भाव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट सपोज जनक फैमिली रे कौन है गोटे छुआ जन्म होती सहित जड़े वृद्ध वयस्क व्यक्ति टपकी गले माने ऊपर को चली गले ठीक अच्छे जड़े छुआ जन्म है घरे गोटे फैमिली रे मेंबर थिले 5 मेंबर थिले 5 मेंबर थिले हठात गोटे छुआ जन्म है गोटे चाइल्ड जन्म है माने 6 मेंबर हो गले किंतु किछि दिन पर पुणी आउ थे घर जी वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने जी सब हाइस्ट एज्ड लोक थिले सी चली गले टपकी गले तो ये पलैला पुणी 5 नंबर हो गला 5 मेंबर हो गले इज इट क्लियर तो ये 5 मेंबर जो 5 मेंबर थिले फर्दर 1 मेंबर आड हेले पुणी आउ थे 1 मेंबर आड हवा पर पुणी आउ थे 1 मेंबर चलीगले तो ये जिनसा आम कहवा जे गोटे ग्रुप आसला पुणी गोटे ग्रुप को आउ गोटे ग्रुप पलैला तो जो ग्रुप एंट्री कर ग्रुप जाऊनी दिस द आडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आडिशन रे कौन हम ना आडिशन रे एट ए टाइम दीटा ग्रुप आड हे आडिशन रे दीटा ग्रुप आड हे तो तुम फैमिली रे जड़े आड हेले +1 हेले जड़े -1 हेले सो दिस इज द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम फैमिली रे एट ए टाइम दीटा छुआ जन्म नेले जाँला छुआ जन्म नेले सो दिस द टाइप ऑफ आडिशन रिएक्शन तुम फैमिली रे 2 जन लोक बाहर की पड़े माने तुमर जेजे तुमर जी बहुत वयोज्येष्ठ व्यक्ति सपोज आम फैमिली कथा कहवा मोर जेजे बापा नहांती सो ये एलिमिनेट हो गले जेजे बापा आग एलिमिनेट हो गले तापर जेजेमा एलिमिनेट हो गले ठीक अच्छे सो एट ए टाइम 2 जन जड़े आसला आउ जड़े पलैब राइट तो एट ए टाइम 2 जन पलैले एलिमिनेशन एट ए टाइम 2टा ग्रुप आड है एडिशन जड़े आड है को आउ जड़े पलैब बा जड़े प्रथम जाइए आउ जड़े आड हम एटा कह तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफाइल आगे आम कौन बुझा दरकार व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल पिला माने इलेक्ट्रोफाइल कहले कौन बुझ किए कहीपर व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कहले कौन बुझा जाए वेरी गुड श्रावणी इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग पिला माने फाइल मीन्स लविंग ओके फोबिया मीन्स हेटिंग ठीक अच्छे यहाँ बहुत जगह आम यूज करवा फोबिया मीन्स हेटिंग फाइल मीन्स लविंग इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल अच्छा को माने केमोफाइल अच्छा ये केमोफाइल मीन्स केमिस्ट्री को को माने भल पाओ केमोफाइल हु आर केमोफाइल केमिस्ट्री लविंग हु आर केमिस्ट्री लविंग केमोफाइल केमोफाइल लवकोश केमोफाइल ओके ठीक अच्छे हु आर फिजिक्सोफाइल फिजिक्सोफाइल फिजिकोफाइल अरे वाह बहुत जना फिजिकोफाइल नितिन भी निकी भी श्रावणी भी प्रेमस भी मु मेथ हु आर मेथोफाइल मेथोफाइल अच्छा मेथोफाइल नवीन कही सारे हु आर बायोफाइल हु आर बायोफाइल बायो को किए बहुत भल पाओ बायोफाइल हु आर बायोफाइल जी जार कैटेगरी जड़े 2-3टार कहले हम हाँ 2-3टार भी हम जड़े चाहिए जड़े जदि 4टी जाक लव कर 4टी जाक हम जड़े केमोफाइल फिजिकोफाइल मेथोफाइल बायोफाइल अल्सो ठीक अच्छे ओके जे ऑल माने ऑल लिखिदेव जे मैथ केमो लिखिदेव जे सॉरी मैथ सी मैथ लिख जे केमो लिख फिजी फिज PHY लिखिदेव बायो बायो लिखिदेव बायो हीरा बायो सर मु सब फाइल एक्सेप्ट फिजिक्स अच्छा तुम्हें फिजिको फाइल को छाड़ी बाकी सब फाइल ना श्रावणी ओके ठीक अच्छे तो ये है फाइल इलेक्ट्रोफाइल अच्छा इलेक्ट्रॉन को लव कर माई सेल्फ टेक्नोफाइल येस आई नो यू दैट यू आर वेरी मच एफिक्सिनेटेड टुवर्ड्स कंप्यूटर सेक्शन या allophile means what is allophile Naveen okay so what is meant by electron loving
इलेक्ट्रॉन को लव करिया गले ता पाखरे को चार्ज रहिबा दरकार जणे इलेक्ट्रॉन लव करछु माने ता पाखरे पॉजिटिव चार्ज रहइबो ना नेगेटिव चार्ज रहइबो अच्छा जे ऑल को लव करे बा जे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बायो इंग्लिश सब को लव करे ऑलोफाइल अच्छा ओके ठीक अछि जे चारिटी जा को लव करिवो हु विल हैव द love towards all the subject he will be allophile like okay so what will be the charge in electrophile electron को love करिवा गले electron रो सॉरी जो electrophile रे charge कोन रहबा दरकार electron को love करिवा गले electron को love करियो माने electron ताकू love करिवा गले जनक पाखरे positive charge okay बहुत बढ़िया E plus okay so to love an electron the electrophile must be positive charged मन रखता इधर पॉजिटिव चार्ज बा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेतिबा दरकार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेतिले बा पॉजिटिव चार्ज थिले आमे ता कहबा इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल आमे का कहि परिबा NO3 प्लस NO2 प्लस सॉरी NO2 प्लस देन तुम्हारा आछि CH3 प्लस अल्काइल ठीक अछि देन आछि आउ को गुडा को तुम्हारा फर्दर SO3 होचे गोटे न्यूट्रल किंतु इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बिकॉज इट डज नॉट ऑब्टेन ऑक्टेट रूल को फॉलो करूनी माने टोटल ऑक्टेट रूल अनुसार जदि हम देखिबा एठी आहुरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस आसी जाउछि ठीक अछि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेक्स्ट हम देखिबा न्यूक्लियोफाइल कोन न्यूक्लियोफाइल कहले कोन बुझो को न्यूक्लियोफाइल कहले कोन बुझे जाए व्हाट इज meant by nucleophile nucleus loving very good nucleus loving means it will be your negative charge Nu minus कारण न्यूक्लियस को लव करिवा गले पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज रहिबा दरकार जे कि प्रोटॉन आडगु बा न्यूक्लियस आडगु लव करिवो सो न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज Nu माइनस लिखा जाए तार अर्थ हमें कहि परिबा जे कोनोसी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इधर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड लाइक एमोनिया गोटे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पिला माने बा नेगेटिव चार्ज कंपाउंड बा नेगेटिव चार्ज रे कोन कोन जीवो OH माइनस जीवो फर्दर तुमरो CO माइनस जीवो ओके देन ए दिटा ही नेगेटिव चार्ज मोर माइंड को बर्तन पाई मन आछे ठीक अछि सो दिस आर द न्यूक्लियोफाइल दिस आर द इलेक्ट्रोफाइल इज इट क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल तापर हमें एडी हमें देखथिले जे एडा होची तुमरो इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुझितिले सो सब्स्टिट्यूशन तुमरो तीन प्रकार रिएक्शन रहिछि सब्स्टिट्यूशन इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स सब्स्टिट्यूशन तीन प्रकार कोन कोन के कहि परिबो व्हाट इज द थ्री टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सॉरी सब्स्टिट्यूशन यस ठीक अछि सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स व्हाट आर द सब्स्टिट्यूशन टाइप्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन माने जोटी इलेक्ट्रोफाइल यूज हबो जोटी इलेक्ट्रोफाइल आउ जन को बाहर करे देबो जोटी इलेक्ट्रोफाइल जीव एंट्री करिवो आउ जन को सेठू ग्रुप बाहर करे देबो न्यूक्लियोफाइल जोटी एंट्री करिके आउ जन को बाहर करे देबो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जोटी तुमरो फ्री रेडिकल मो कहि नथिले फ्री रेडिकल माने कोन फ्री रेडिकल माने CH3 dot is a free radical X dot is a free radical okay these are the free radical रो माने कोन ना एठी तुमरो कार्बन रे तीनटा बॉन्ड हो जाइथिबो किंतु आ गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थिबो जहार एनर्जी लेवल बहुत हाई तो ए पर्टिकुलर ए इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी लेवल बहुत हाई थिबो किंतु एटा वेकेंट थिबो दिस इज वेरी मच रिएक्टिव टुवर्ड्स ए अनदर फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ताको फ्री रेडिकल जेतोले यूज करा जिवो ठीक अछि
बहुत बढ़िया आंसर नवीन। तापर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आमर केते प्रकार देखिबा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केते प्रकार देखिबा, आउ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रो टाइप मु भी जानिनी पिला माने, कारण मु आज जाए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एते डिटेल्स रे केबे पढ़ेनी कोठी भी, किंतु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मु तुमरा ए जो टाइप गुडा को डिटेल्स रे तुमे माने जदि पढ़िबो पीजी रे पढ़िबो, इवन यूजी रे अछि किंतु कम माने +2 रे +3 रे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमरा +2 रो आरंभ करिकि पीजी जाए अछि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किंतु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रो टाइप्स गुडा को सब गुडा टाइप्स रो रिएक्शन नाही, तुमरा केवल गोटी एरोमेटिक अछि एबे यूजी रे +2 रे आ यूजी रे। सी व्हाट इट मे बी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होची Ac1 Ac2 AcAr, ठीक अच्छे। पुणी AcI भी अच्छी इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एटा भी से भाया हम SN1 SN2 SNAr। व्हाट इज तुम्हें कह सर ए 1 2 कौन कर लिखिदे आप 1 2 माने ये आम कहीपर दिस इज यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर तो मोलिकुलारिटी तार 1 हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हें कह पुणी सर ए यूनिमोलिकुलर कौन, तार अर्थ गोटे मलिक्यूल से रिएक्ट करिवो। यूनिमोलिकुलर माने केवल गोटे मलिक्यूल ही रिएक्ट करिवो, आ अन्य मलिक्यूल गुड़ाक केवल साइड रे ही थिबे, से माने काम को नुह, ठीक अच्छे। तुम्हें मैंने देखी थे जे तुम घरे भी बा कौन जगह भोजी भात हेले किसी सांग था से सैड होगी था, आउ किसी सांग बहुत भिगरसली काम करती, जो मैंने काम करती से ही कामिखा से भाया जो मलिक्यूल रिएक्ट कर पर्टिकुलाली रिएक्ट ही कर सेगुड़ा यूनिमोलिक्यूल सेगुड़ा ही काउंट रे जो देबा ताले मलिक्युलारिटी आसीबो 1। फर्दर आसीबो एटा बाई मलिक्युलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मलिक्युलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मलिक्युलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आउ एटा आसीबो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर, बुझी पारला समस्ते? सेमती SN1 हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्रत्येकर रिएक्शन अच्छी, मेकानिजम अच्छी, तार स्टेरियो अच्छी, तापर तार विभिन्न प्रकार फैक्टर भी रही, विभिन्न प्रकार डेप्थ बहुत कॉन्सेप्ट डेप्थ को अच्छी यार गोटे गोटे रिएक्शन को गोटे गोटे चैप्टर एक्चुअली गोटे गोटे रिएक्शन गोटे गोटे चैप्टर करिकी आम पीजी रे पढ़ाऊँ पिला AC1 गोटे AC2 गोटे AcAr गोटे 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 चैप्टर, ठीक अच्छे। जमी तुम ऑर्गेनिक रे ऑर्गेनिक गोटे चैप्टर कहले ऑर्गेनिक गोटे 6-7 ऑर्गेनिक रे आल्डेहाइड कीटोन गोटे चैप्टर, से भाया AC1 गोटे चैप्टर बहुत बड़ चैप्टरटा। सी व्हाट इट मे बी आउ डिस्कसन न करिके आम बुझीपार समस्ते। डिड यू अंडरस्टैंड जे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुझीपार समस्ते? पे गोटे आइडिया आसला कि इफ यू हैव गॉट ए आइडिया प्लीज पुट येस एंड इफ यू डिड नॉट गॉट एनी आइडिया प्लीज पुट नो। जदि कोठी डाउट रहा पचार पिला माने सब गुड़ाकर टाइप बर्तमान कहीहबनी, सब गुड़ा एग्जांपल नहीं कहीहबनी, केवल आम जस्ट गोटे प्रिलिमिनारी आइडिया आसीजा दरकार, ठीक अच्छे। बर्तमान आम देखा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तार अर्थ गोटे एरोमेटिक कंपाउंड रे जिते गोटे इलेक्ट्रोफाइल आसिक अटैक करिवो, एरोमेटिक कंपाउंड रे गोटे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो, किंतु ता सहित गोटे ग्रुप को बाहर करदेव, गोटे ग्रुप को जेकोसी गोटे ग्रुप को सी बाहर करदेव। सपोज लेट इट बी वाई, ठीक अच्छे, गोटे वाई गोटे ग्रुप को बाहर करदेव, ग्रुपटा बाहर की पलैब जहाँद्वारा तुम कौन प्रोडक्ट हम जब आम देखा प्रोडक्टा आमर ये आसो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक अच्छे। बेंजीन नहीं जाऊँगी मु एरोमेटिक होता दरकार, एरोमेटिक आ नॉन एरोमेटिक मु इवेन क्लास 11 रे भी पढ़े ऑनलाइन रे, तो ये कि वाई माइनस बाहर जीव ये जिनसटा जो हम यहाँ कह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? समस्ते बुझीपार क्या कह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? आमे केवल आज गोटे रिएक्शन आज मुझे सारीदेवी भावुली, किंतु ये प्रिलिमिनारी आइडिया बहुत गुड़े थिला जो गुड़ा को कवर करने चक्कर मु आज सारी पारनी, किंतु आसंता काली या पुणी सारीदेवा। आज आउ टिके पढ़ीदेवा या ऊपर रिलेट करिकी, ठीक अच्छे, ओके। सो इलेक्ट्रोफिलिक
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रे कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम बहुत गुड़े टाइप्स रही नाइट्रेशन हालोजिनेशन टा मुझे पढ़ेदेवी हालोजिनेशन नाइट्रेशन फर्दर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल अल्काइलेशन सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पुणी आउे तुम अच्छी ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रे सल्फोनेशन एभलिया पांचटा सार यही चैप्टर टा केबे सर आसंता काली सरीज रुद्र ठीक अच्छे आसंता काली चैप्टर सरीज सो आम देखा फास्ट वन इज नाइट्रेशन आज सरी जाता किंतु आज मुझे डेरी हो गला माने बहुत गुड़े जिनस बतैली तो कौटा कौन बुझा जाए टाइम पड़ेगा सो प्रथम आम देखा नाइट्रेशन देखा पूर्व आहरी भी गोटे जिनस बुझ नाइट्रेशन पर देखा आग आम देखा ये बेंजाल्डिहाइड आम ना बेंजाल्डिहाइड जिते गोटे इलेक्ट्रोफाइल आड हम व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू बेंजाल्डिहाइड इट विल अटैक एट व्हिच पोजीशन एटा को पोजीशन रे अटैक करिवो तापरे यूनिट 9 स्टार्ट करंतु प्लीज यूनिट 9 माने कोटा कहलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यस आई थिंक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब गुड़ारे गोटे गोटे हाइड्रोजन रहिबो ठीक अच्छे ताले रुद्र को यूनिट 9 माने मोर मन पड़नी एक्चुअली यूनिट 9 गोटे मिनिट रुह तो यूनिट 9 यस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ठीक अच्छे यूनिट 9 माने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक अच्छे एटा आल्डिहाइड रही बर्तमान जिते इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल जिते अटैक करिवो को पाखरे अटैक करिवो एट व्हिच पोजीशन शैल इट अटैक तो ये प्रथम आम देखा रेजोनेंस हवा द्वारा ये तुम ये भाया ठीक अच्छे रेजोनेंस हवा द्वारा ये हम जद्वारा प्रथम आम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुड़ा ड्र करदे तापर इलेक्ट्रोफाइल कौटी अटैक करने कथा बुझेबा अर्थ एंड पारा पोजिशन रे अटैक करिवो देखिबा अर्थ आ पारा रे अटैक करिवो कि मेटा रे अटैक करिवो कोन देखि नबा पिला माने CHO इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो डबल बॉन्ड CO माइनस H ठीक अच्छे देन देयर विल बी एटी H एबे लिखिबानी H एमदी जेम सेमदी छाड़ी दियो H एबे लिखिबानी ठीक अच्छे एमदी बेंजीन जेमदी लिखा जाए लिखि देबा डबल बॉन्ड C फर्दर एटी तुमरो गोटे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हे जिवो देयर विल बी ए पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओके तापर स्टेप रे कौन हम फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस बॉन्ड सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट सर हालो अल्केन हालो आरिन्स या पूर्वर थिला यूनिट 10 सॉरी यूनिट 11 आई थिंक यूनिट 11 यस सर यूनिट 11 नहीं यूनिट 10 भूल कहली यूनिट 10 राइट यूनिट 10 रे थिला डबल बॉन्ड सी या पर एटा यूनिट सरीनी एठी अधा सरीची मो 12 रो ए सरीची 12 रो बी भी अच्छी यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी ठीक अच्छे देयर विल बी ए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी again this will be resonance it will undergo resonance and again what will be the compound this is your benzene ring there is double bond CO minus bond H then this is your double bond it has your positive charge further this double bond will be shifted towards this and this O minus will be shifted towards this and we will get the benzene ring C double bond OH will be the thing double bond further double bond okay so ये भले आमे चारिटा रेजोनेटिंग पांचटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई गले या हाइड्रोजन गुड़ा को पिला मु इरेज कर दूची हाइड्रोजन गुड़ा लिखी टाइम किस दरकार नहीं ठीक अच्छे सो वी गॉट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हियर
लिखिले भी किसी असुविधा नहीं किंतु लिखिले बहुत बड़ बड़ लगुच 3 4 5 तो जदि आम देखा यही कंपाउंडटा बेंजाल्डिहाइड पर्टिकुलरली बेंजाल्डिहाइड प्रत्येक कंपाउंड अलग अलग रही और दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम रेजोनेंस सो वी कैन से बेंजाल्डिहाइड जो देखा को पोजिशन रे प्लस पोजिशन क्रिएट है गोटे हूँ यही पोजिशन रे ऑर्थो एटा पारा एटा ऑर्थो तो ऑर्थो आउ पारा आउ यही पोजिशन कहुए मेटा एटा कहुए ऑर्थो पोजिशन ठीक अच्छे ऑर्थो एटा कहुए ऑर्थो पोजिशन एटा कहुए पारा पोजिशन एटा कहुए मेटा पोजिशन ओके सो ये भाया एटा भी मेटा दिस इज ऑल्सो ऑर्थो ठीक अच्छे ऑर्थो पारा मेटा ए पोजिशन गुड़ा कहुए ताहले आम जो देखा प्लस चार्जटा कौटी कौटी जेनेट होती ऑर्थो आउ पारा रे सो बेंजाल्डिहाइड जितेबाला प्लस चार्ज ये जेनेट होती मत कहल जितेबाला ये प्लस अच्छी जो इलेक्ट्रोफाइल आसो इलेक्ट्रोफाइल भी चार्ज प्लस सो ई प्लस जितेबाला आसो सी कौन यही ऑर्थो आउ पारा रे लगे अटैक हम मत कह ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल जितेबाला आसो यहाँ ऑर्थो आउ पारा रे अटैक हम ना नहीं will it attack at ortho and para or not रुद्र मल्लिक आम कौ चैप्टर पढ़ा कौटा पढ़ानी आई विल डिसाइड इट सो डोंट बी वेरी तुम्हें आग प्रीवियस वीडियो देखनी अटैक हेनी बहुत बढ़िया कथा लवकुश तो इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक एट दिस पॉजिटिव पोजिशन सो ये पॉजिटिव पोजिशन रे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करिवो नाही ये अटैक करिवोनी किंबा पारा पोजिशन रे भी अटैक करिवो नाही बिकॉज पारा पोजिशन रे प्लस चार्ज जनरेट होछि ताहले इलेक्ट्रोफाइलटा कोठी अटैक करिवो बळका जो पोर्शनटा रहिला कोडा आ रहिला मेटा रहिला दैट्स व्हाई बेंजाल्डिहाइड इज कौन हबो बेंजाल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन for aromatic electrophilic substitution aromatic electrophilic substitution is it clear बुझी पारल समझते बुझी पारल समझते ताले मुझे यदि पचारि न्यूक्लियोफाइल को पटे अटैक हम न्यूक्लियोफाइल बेंजाल्डिहाइड इज व्हिच डायरेक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन हम बेंजाल्डिहाइडटा सो बेंजाल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे मैंने सब गुड़ाक डिटेल्स सार ऑर्थो मेटा पारा टिके आउ थे कही दिंतु ऑर्थो माने यही पोजिशनटा माने फंक्शनल ग्रुप रो नियर बाई कार्बन दुईटा को ऑर्थो कह ताठू टिके दूर रहिले मेटा कह तार अपोजिट रे पूरा रहिले ता कह पारा इन केस ऑफ बेंजीन ओनली बेंजीन रे ही एभलिया कह पारियो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड रे ही कह पारियो समस्ते बुझी पारलो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई बेंजाल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हाई बेंजाल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिड यू अंडरस्टैंड बुझी पारलो जदि इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज से yes if you did not understand then please say no sir please repeat again then I will again repeat yes sir okay so we conclude here that benzaldehyde is meta reacting for or aromatic electrophilic substitution whereas benzaldehyde is ortho and para directing for aromatic nucleophilic substitution so hame कहि परिवा that benzaldehyde is ortho directing o directing shortcut रे मु लिख देली ortho directing for SNAR that is aromatic nucleophilic substitution okay ठीक अच्छे देन वी विल गो फॉर द रिएक्शन पार्ट ये बहुत टाइम हो गलानी पिला माने आज आम पढ़ी होनी आज होमवर्क भी किसी दौनी बहुत टाइम हो गलानी आई हैव टू डू सो मेनी वर्क्स 6:30 हो गलानी
आज ये ही थाउ आज किसी होमवर्क भी दौनी लेट इट भी गोटे दिन ब्लांक जाओ खाली रे तुम्हें रिविजन करनी आसंता काली मु काली की पुणी क्लास करी होमवर्क देवी ओके काली रो क्लास रे सब गुड़ा कवर हम जेहेतु बर्तमान आहरी बहुत किसी कवर कर इच्छा थिला किंतु टाइम होनी टाइम तो ऑलरेडी हो सारा तुम्हें देखुच हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये कहीं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दौची कहीं दौनी फ्रीडल क्राफ्ट आइसोलेशन और अल्काइलेशन दौनी ऊपर आम डिटेल्स रे पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट गुड़ा को तुम्हें डिटेल्स रे पढ़िले पर्टिकुलरली अल्डिहाइड कीटोन को फॉर सीएचएससी बोर्ड ओनली सीएचएससी बोर्ड रे ताले तुमको बहुत मार्क फैचिंग हम इवेन नीट रे भी बहुत मार्क फैचिंग हम आ अल्डिहाइड कीटोन इज द गेट पॉइंट टू एंट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अन्य चैप्टर को धरिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पशि हम ना कारण अन्य चैप्टर रे सब गुड़ा कॉन्सेप्ट नहीं कोठी कम किसी कॉन्सेप्ट अच्छी कोठी किसी कॉन्सेप्ट बाद पड़ जाए आई होप you enjoyed the class. If you enjoyed, please like and make your valuable comment after completion of this class. And again, if you wish that your friends should watch this video, please share among your friends as well as please put in your status if you wish to. Thank you.